कहा नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी थिंकिंग है। बचपन में मेरे बच्चे जो है वो बॉम्बे के पास में, मतलब विलेज सॉर्ट ऑफ जगह है जहाँ पे वो पढ़ते थे। सो बच्चों को शुरू में मालूम नहीं था, तो मम्मी वो गर्लफ्रेंड हो। सो आई टोल्ड माई चिल्ड्रन, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता है, फ्रेंड इज फ्रेंड। एंड जनरली ये जैसे हम कहते हैं, फ्रेंड इज वन हु, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड सो वैसे देखा जाए तो मित्रता के जो है डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक तो कहते हैं मित्रवत, जैसे अभी हम सब लोग मिले हैं, ये भी वी आर फ्रेंड्स, है ना। अब एक लेवल होता है कि कुछ हितैषी के तौर पर, वेल विशर के तौर पर फ्रेंड है। एक होता है कि बात बात पे हेल्प कर देता है, एक जरूरत पड़ने पर करता है, एक आपके किसी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करता है। एंड वो फ्रेंड है कि आप जिससे अपनी जो दिल की बात जो किसी को नहीं कह सकते, इंटीमेट, वो घनिष्ठ। सो फ्रेंडशिप के बहुत लेवल्स हैं, आई थिंक देयर आर डिफरेंट लेवल्स। सो उसमें हमें, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि आज हम वैसे बहुत मॉडर्न हो गए हैं पहनने ओढ़ने में और इसमें उसमें, लेकिन जहां एक मैन और वुमेन बात कर रही है या एक लड़का और लड़की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक इन दैट नेगेटिव टर्म्स, exactly, which is very very unfortunate situation. Absolutely, that is So exactly the point we I have was to trying develop to our children in the new generation in this way ki see, I mean the very concept of co-educational this thing, education system co-education is this thing that ये जो बीच में जो gender bias ये कि ये man और ये women है, ये नहीं होना चाहिए। So, but still इतने हम so called modern हैं, वैसे आदमी कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो, आउट ऑफ रफनेस या वो करके किसी भी लेवल पे। और वैसे अगर कोई दो सभ्य लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो पीपल सी इट इन ए very skeptical way or whatever. So very that's skeptical, yeah. So that's a very unfortunate situation. At least things have opened out, I would feel now. I feel that पहले से लेके अभी थोड़ा open out हुआ है. Yeah. Let me look at the definition in a very generic way for dosti. I think it was in a movie called Yari Dushmani or something like that, Sunil Dutt वाला movie. उसमें एक थीम और ये टैग लाइन जैसे होता है ना, उसमें दोस्ती धर्म है, रिश्ता है, यार की यारी नहीं, क्या बोलते हैं, दोस्ती धर्म नहीं, रिश्ता है, यार की यारी खुदा है, दुश्मनी शैतान है. दिस इज हाउ आई थिंक द टैग लाइन ऑफ दैट मूवी वाज. उसमें बहुत इम्पैक्टफुल है इन द सेंस फ्रेंडशिप, your friendship with a variety of friendship, like friendship with your neighbors. They are the immediate people for you to help when there is a calamity or jo bhi hai. Then comes your own relatives, then friends who matter. Yeah, and there is a thick line between friends and acquaintances. I mean, many of us are probably chatting and slowly going one level up, or value chain ऊपर जाते जा रहे हैं हमारे दोस्ती में. Like for example, there is a inherent comfort for me when I see some of the faces with whom I have been interacting for the last so many months. So अपने में अभी रमन जी ऐसे हैं कि उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ कभी भी. अभी अरुणा जी भी very comfortable है हमारे लिए, आप भी comfortable है. So some of them over a period of time will become a little more comfortable. So this is the building process when it comes to friendship. And friendship, I have seen that it is healthy to have good friends. दोस्त बहुत सारे हैं जिनके साथ आप ग्रो करते हो बचपन से. when you grow with a set of people, you see everybody has branched off, but there is a attachment. I mean, in my case definitely we at least meet once a year, क्योंकि अभी हम लोग सब scattered हैं. I am in Bangalore, some of them are in Indore, some are in Bombay, but we grew up in Bombay, we grew up in San Matunga area. So साल में एक बार we all come from all locations, live in San in some hotel, walk around the area where we grew up, जहाँ पे हमारे स्कूल था या और कुछ था, यहाँ हमने मौज मस्ती किए थे, वो सब याद करके we relive the बचपन के दिन with very close friends with whom we grew up, and we are there like a family. It's an extended family भी नहीं है, straight forward family जैसा है कि अगर किसी को तकलीफ है, they are in trouble, we are there as immediate help. That is when it comes to friendship. But as I grew, when we in our growing days, we were told by
अब आप काफी ब्रॉड माइंडेड है संतोष जी. वी वर टोल्ड यू शुड नॉट टॉक टू गर्ल्स. हमारे घर में हम 3 लड़के थे. वी वर 3 बॉयज. ओनली मदर वाज द लेडी इन द हाउस. वी वर टोल्ड नहीं, लड़कियों से बात नहीं करना है. So much so, we didn't know how to handle talking to girls. मुंह से अनाप शनाप निकलते थे उनके सामने. Whereas as we over a period we mature and then corporate world में चले जाते हैं, तो you have to deal with a whole lot of people, and then that is when actually one realizes कि okay, एक तो जल्दी में whenever you get married in your 20s or early 20s or जब भी, and if you have not interacted with any women till then, you are really caught with your pants down. You don't know how to deal with it. So ये होता है. So उससे लगता है कि the generation which came next, अभी हमारे बच्चे जो हैं उनको तो हमने काफी freedom दिया था कि like यार you be friendly with everybody, there is no harm. I don't see any harm. So जो भी है, everything is, there is a reason for it. So अभी एक होते दैट एम्बेरसमेंट वी हैड टू कम आउट ऑफ दैट कि कैसे बात किया जाए एक लड़की के साथ इनके, बिकॉज यू कम, क्योंकि एज बॉयज वी वर हार्श, वी वर रैश, कुछ भी बोल देते थे. रियली टंग में कुछ कंट्रोल ही नहीं था. मुंह खोले तो गाली निकलती थी. हमारा एक जमाने का टाइम था. उसके बाद से निकल के चेंज होके, एंड एज आई ग्रू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, आई रियलाइज दैट you can confide in the opposite sex much better than men. ये भी है. There is a lot with of refined language. With refined language. No, you really can confide. You can talk. You can share. Good evening. Hello. Good evening, Ajay ji. So my feeling is that over a period of time, I have realized that I have realized and I see value in having a very healthy friendship with the opposite sex. कोई problem नहीं है. You can be buddies. You don't have to get physical. You can be friendly in the best possible manner. You can feel for the individual. लेकिन जो स्टिग्मा जिसके साथ अटैच है, the moment people start thinking कि अरे वो लोग बहुत गुफ्तगू, उनका बहुत गपशप चालू रहता है ऑफिस में. they are discussing, कैबिन में बैठ के कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. इतने क्या बात करते होंगे, but there may be very good thing that you may be actually trying to help somebody, but it is viewed, and it takes time. And if people continuously see two of them together, there is always a challenge for you at a personal level. हमारे साथ हुआ है. In fact, actually my wife is there in the call. She has got a call from one of the persons who said that your husband is going around with somebody. But she had full trust in me. She said that it's okay, I will deal with it, don't worry about it. And then when the time arose, she said that अभी तुम्हारा ये गपशप ज़्यादा ही हो रहा है, there is a problem, there seems to be news floating around that you are doing things like this. She spoke to me the same evening. So then it dawned on us but it was actually a prank. What eventually turned out was that somebody was trying to pull a fast one. But we were already 20 years into a marriage when this particular thing happened. But for a bacha or something, it would have been a very difficult thing. It could have been nasty. It could have been a very, very devastating experience. So I am of the view that maturity comes over a period of time, and it is healthy to have friendship across with various genders. There is no problem in my view. Now, I would like comments from each one of you. Whoever wants to talk first, please go to the reactions button and raise your hand. मैं थोड़ा सा बोलूंगी, वो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि मुझे जाना ऑलरेडी मैं बोल रही हूँ. लेकिन आपने वो जो फिजिकल की बात कही ना, आई थिंक व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स फिजिकल का. सी अपोजिट सेक्स में कह सकते हैं कि वो जो टच की जो एक फीलिंग है, लेकिन वो जो को एजुकेशन सिस्टम है वो इसीलिए है कि लड़का और लड़की पास बैठे. दे वोंट फील इट वंस. आई मीन एक फैमिली के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे अगर एक ट्रस्ट वाला फैक्टर है,
एक फ्री थिंकिंग का और एक ओपन माइंडेडनेस का अगर वो एटीट्यूड विच इज नॉट देयर अगर है, तो आई थिंक इट शुड नॉट, लाइक आई से, आई डोंट नो पूरे उस कल्चर में, यानी जैसे अमेरिका में जब हम जाते हैं तो वहां बच्चों का क्या है, इवन उनके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, हम जब जाते हैं तो वो भी हमें भी ना इस तरह से करके आंटियों करके, so embrace, and we also embrace. So it's embracing when it becomes, when it's with no evil thought in your mind, or it's affection, just affection से. So once you have embraced this thing, तो ये वो जो physical वाली चीज है वो आती नहीं. And friendship doesn't have, if उसके further level पे अगर आप physical होने की बात करते हैं, I think that question shouldn't arise once you are open. Like मैं आपको कहूंगी कि जब जैसे मैं एक आध बार ये हुआ यहाँ पे, जब मेरी बेटी दिल्ली में मेडिकल वगैरह कर रही थी, तो उसके बाद में वो यहाँ आई, उसने कहा कि मम्मी मेरा एक फ्रेंड जो है, हमारे सामने ही मॉल है घर के, तो उन्होंने कहा मम्मी तो हम मॉल में मिलने, यूं करके उनने सोचा कि मम्मी को वो नहीं. मैंने कहा ऐसा है बेटा, पहले तुम उसे घर पर लेकर के आओ, सो दैट ही नोज दैट आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू बोथ. यहाँ आओ, मैं खाना खिलाऊंगी, उसके बाद में तुम जाओ अपने वहां पे मॉल वगैरह पे. इसी तरह से अमेरिका में मेरी बेटी को जब शिफ्ट वगैरह होना था, मैं और मेरा बेटा उसका सामान लेकर के आ रहे थे, एंड उसका एक मेडिकल का फ्रेंड जो कि अमेरिका में, इंडिया से जा चुका था, दे वेंट विद सम ऑफ द लगेज एंड मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू दिस थिंग. सो इफ यू, आई थिंक बच्चे अगर आपने उनको ग्रोथ तरह से किया है, अगर वो ग्रोथ जिस तरह से आपने चाहा वो ग्रो करें, अगर उस तरह से बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो वो दे आर मैच्योर्ड इनफ नॉट टू टेक डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रीडम दैट इज बीइंग गिवन टू देम. दैट्स व्हाट आई फील. बस अभी मैं बाकी अदर्स सुने करें, और आई थिंक एनी टाइम आई विल जस्ट रेज हैंड एंड आई विल टेल. जब तक कुछ खास ही मेरी बात नहीं हुई, आई वुड लाइक कि दूसरे लोग करें. और वो जो गाना आप जब फिल्म का कह रहे थे, तो वो जो गाना है, यारी है ईमान मेरी यार मेरी जिंदगी, तो मतलब वो इंटीमेट उसका वो है. सो ओके, दैट्स ऑल. Okay, I think I lost you for a while क्योंकि I was thrown out of my this and I came back, तो थोड़ा बहुत मिस हुआ है, but I think gist of it आपका मैं समझ गया. अच्छी बात कही है आपने, and then there is a lot of merit to what you said, and we will like to hear from मुक्ता जी next. अनम्यूट कर लीजिए आपको. हाँ जी, नमस्कार सभी को. आवाज आ रही है? या बिल्कुल आ रही है. टॉपिक तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं. हमारा एज अब जितनी हो गई है, इतना एक तीन दौर निकल गए. एक बचपन, एक कह सकते हैं जवानी, और ये अब थोड़ा सा बुढ़ापा कह सकते हैं. वो एज के अकॉर्डिंग, वैसे हम माने ना माने, एज तो है ही 50-60 के बाद. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बचपन है, वो बचपन में सब कुछ है ही नहीं. बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. और जब एक थोड़ा सा एक समय आता है, जब चेंजेस आते हैं अपनी बॉडी में, तो चाहे दोस्ती है, पर कहीं ना कहीं एक उसका फिजिकल अट्रैक्शन का पार्ट है. इसीलिए एक समय के साथ साथ कोएड एजुकेशन का एक जरूरत महसूस हुई कि ऐसा होना चाहिए. और जहाँ तक मेरे अपने बच्चों का सवाल है, मेरे बच्चे भी 12th तक तो वैसे ही पढ़े हैं, मतलब गर्ल्स स्कूल में और बॉयज स्कूल में बेटा. बट उसके बाद, क्योंकि फिर तो उसमें जाना पड़ता है, ग्रेजुएट करना पड़ता है, आगे पढ़ना पड़ता है, तो को एजुकेशन ही होती है. तो दिल्ली में पढ़ी है, मैं मेरठ की हूँ, और मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़े, चंडीगढ़ पढ़े. उसके बाद बेटी मेरी बड़ी वाली फ्रांस में रही है, यानी वो तब 20 की ही थी कि वो चली गई थी. वहीं उसने काफी समय गुजारा, दोस्त हुए उसके, और वहीं एक फ्रेंडशिप हुई. बेशक वो इंडियन ही बॉय था. और उसके बाद काफी समय, 5-7 साल बाद उनकी शादी हुई. ऐसे ही मेरी छोटी बेटी के साथ भी हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि आपके चाहे फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात है, या दोस्ती की बात है, या जो भी है, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज मायने रखती हैं. मतलब अगर हमारे बच्चों को हमने इस तरह की उनको वैल्यूज दी हैं कि आप फ्रेंडशिप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी जो लिमिट्स हैं, उनको क्रॉस मत करिए. अगर बच्चे उस पर चलते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं. एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, 1989 में. उसमें एक
विलन का डायलॉग था मनीष गोयल का कि लड़का लड़की में दोस्ती नहीं होती। वो 33 साल पुरानी बात है, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि दोस्ती हो सकती है, क्योंकि समय इतना बदल गया है। हम लोग इतना समय गुजारते हैं साथ में, लड़का लड़की अब भाई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, उनको इतना साथ रहना पड़ता है कि वो साथ रहेंगे तो उनमें एक बॉन्डिंग आती है, फ्रेंडशिप की, जो आती ही है, आ जाती है। हाँ, उसमें अगर कुछ अभी किसी को महसूस होने लगे, लड़का लड़की को, क्या लड़का या लड़की, हालांकि लड़की की तरफ से थोड़ा सा मैंने महसूस किया है, क्योंकि मेरी भी अब 2 ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, अब बड़ी हो रही हैं, तो उनको भी हम देखते हैं थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यही है कि लड़कों की तरफ से थोड़ा सा हो सकता है कि वो जल्दी गर्ल्स फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो, पर लड़कियां थोड़ी सी फिर भी, जहां तक मैं समझती हूँ, थोड़ा अपने आप को मैनेज करती हैं और संभाल लेती हैं। पर कहने का कुल मिला के सार मेरा तो यही है कि घर से विश्वास बच्चों पर देना चाहिए, और समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। और मेरा यही मानना है कि बच्चों को हमें आजादी दें, पर थोड़े से एक अंकुश तो नहीं कहूंगी, पर थोड़ी सी एक नजर नजर होनी चाहिए। आप उनसे फ्रेंडशिप रखिए, उनसे दोस्ती रखिए, उनसे इतनी बातचीत करिए कि वो आपसे इतने फ्रेंडली हो, कम से कम पेरेंट्स के साथ तो हो। हालांकि मेरी जो बड़ी ग्रैंड डॉटर है वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, पर फिर भी जो जितना वो माँ बाप के साथ होगी, मैं तो कहती हूँ कि उसको होना चाहिए। वो अच्छे से अपनी हर बात को डिस्कस करे। और जहां तक दोस्ती, आजकल के समय में दोस्ती पर विश्वास किया जा सकता है, लड़का लड़की की दोस्ती पर विश्वास किया जा सकता है, और ये फैक्ट है, मानना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी। अब बाकी और लोग क्या कहते हैं मैं सुनना चाहूंगी। थैंक यू। हेलो। आवाज नहीं, कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज आ रही है। आई थिंक लक्ष्य सर ने का इंटरनेट कनेक्शन। ओह अच्छा, तो अगर कोई बात नहीं तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू। आई एग्री। आप भी एग्री करते हैं। वैसे तो एक और बात भी है कि आयरलैंड के एक पोएट है बड़े फेमस, ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने कहा है कि फ्रेंडशिप इज फार मोर ट्रेजिक देन लव, एंड इट लास्ट लॉन्ग, तो लास्ट लॉन्गर, है ना? तो आप विश्वास कर सकते हैं फ्रेंडशिप पर। आजकल जो आजकल का दौर है उसमें फ्रेंडशिप को लेके, क्योंकि अब तो इतना समय इतना बदल रहा है। आवाज तो आ रही है, लेकिन आई थिंक कोई नेट की प्रॉब्लम? सर अनम्यूट योरसेल्फ सर। अब पता नहीं रैक सर ने कितना सुना है, बट सर को आवाज आ रही है, बट ओके चलिए ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये एक्सटेम्पोर होता है, तो आप दोबारा बना के तो बोल नहीं सकते लिखा हुआ या कुछ। ओके, बीनू मैम, मुक्ता मैम, हेलो, फ्रीज हो गया वीडियो। हाँ बीनू मैम, योर व्यूज। can everybody hear me? Yes, yes, ma'am. We all can hear you. Probably I got the topic wrong. Means if we are talking about the our next generation, our children's in our children's parlance, whether they can be friends. I thought we were talking in our parlance, how we are viewed when we are friendly with other men. It's a fact. Yeah, that also you can discuss. You can. I studied in a co-ed, then went for college, then went for job throughout co-education. Friendship, as Ma'am Paliwal said, it should not be gender specific, ideally. Ideally. But we are not living in ideal situations all the time. You are, say, I am friends with somebody. I am perceiving him as a friend. But sometimes later complications arise when that person develops feelings, or you develop feelings, or your spouse thinks that you are having a fling or a serious affair with him. So that kind of situations arise when you are in these kinds of friendships. So you have to tread the line very cautiously. And where you are cautious,
then friendship takes a beating sometimes because you are always conscious. And even till today, if it's a female friend, I'm very friendly. But while talking to men, I become conscious. Till date, though studied in co-ed, in corporate jobs for 25 years, in a family where there are so many men, but still, because I don't know, I am conscious if other person is perceiving me to be like friendly or he can flirt around or something like that, then things become very complicated. So this is as far as our generation, like our generation stands on today, because we are still not, because culturally we have been cultured like that. लड़के हैं घर मत बुलाओ, उनके घर नहीं जाओ, अगर वो घर पे हैं तो उनके मॉम डैड घर पे हैं कि नहीं. All these kind of things were drilled in our head, so we are conscious also, and we have, at least I have inculcated that in my daughter also, and keep it track. When she is going to a female friend, I am going to, I'll always check, is mummy home, what is the party about, what time you will go, will somebody drop you home. So Muktadi, that way I will say that that partition, whether how much soever you deny, with due respect to Madam Paliwal also, because they also have friends. I personally have a lot of male friends who are writers, authors internationally, because I have myself been an author. So, but that line is there because God has created like that. That part of chemistry or physical intimacy cannot be ruled out. I'm not saying that it is always there, but it cannot be ruled out. So it is for our generation, it is for my mom's generation, it is for my daughter's generation, and for her children's generation. So according to me, uh, it is a tightrope walk or kind of a trapeze act. When you are like, I go for morning walk in the park, if I talk to one or two fellows who are walking from here, how are your children and all. Next day you will say, अरे रोज ही बात करते हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं. So it happens. So that way, so society or our conditioning, I will say, has been like that. But I believe friends are friends. I have lots of friends, girls, men. Doesn't matter age, gender, nothing matters. And I enjoy being in that space. But yes, I'm very cautious with some people around, because it may happen, it may trigger some kind of feeling, then it will be in a troublesome situation for that person also, for me. So children, I don't want to talk, but yes, even we have been in such a scenario through our life. Like sir said that he was talking to a colleague and his wife got a call. So same thing happens with ladies also, that husband, अरे मैंने आपकी वाइफ को दादर स्टेशन पे देखा था, and Dadar station is so crowded you can't even recognize your own mom. Forget about your friend's wife. So all these kind of things keep happening. So let's see. Times are changing. I agree with Madam Paliwal. For our children, scenario is much smooth because we are educated, we are broad-minded. We have faced those restrictions which our children have not faced. So for them, world is a better place, which was not with us, quote unquote. Thank you, Binuji. I think all these experiences are very key and very important for everyone to learn from. And I think ladies are having that extra special sensitivity that makes them understand which touch is not right and which touch is right. So I think that is a very special quality that God has given you folks. So you know what is right and what is wrong for sure. So you will not be so gullible in my view. संतोष जी कुछ कहना चाहती हैं. Please go ahead जी. Unmute करना है आपको. हाँ लक्ष्मण जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा जाना भी था. अच्छा, कुछ पॉइंट्स जैसे मुक्ता जी ने वो जो कहा, वो एक फिल्म को कोट किया कि फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्गर देन लव. आई से लव को हम ऐसे क्यों देखते हैं? लव का एक ही एस्पेक्ट, लव इज
फादर और बेटे में, पिता और बेटी। लव इज अ लव के बिना दुनिया नहीं रह सकती। आई मीन इट्स इन एवरी रिलेशन लव इज देयर। विदाउट लव मतलब ये करके, सो वी शुड नॉट सी लव एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज माय दिस थिंग। अगर ये साइकोलॉजी हमारी, देन व्हाई डू यू सी फ्रेंडशिप इन एट ए ग्रॉस लेवल, कि वो ही हो कि फिजिकल होना ही जरूरी है। व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमारी थिंकिंग समाज की, परिवार में, इंडिविजुअल्स की अगर थिंकिंग वो होगी तो जरूरत ही नहीं महसूस होगी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की या इविल उसमें करने की, या जितनी विकृतियां हैं समाज की वो कम होगी अगर हमारी थिंकिंग जो है वो थोड़ी ओपन। वो तो ये इट्स नॉट है कोई कि जादू की छड़ी करी और वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट देन वो कहते हैं ना, ड्रॉप ड्रॉप भर करके तो इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आए, पारिवारिक लेवल पे चेंज आए, एंड देन समाज के वो, विच इज नॉट सो इजी। सो मेरा तो कहने का यही है कि आई थिंक फ्रेंडशिप इज जस्ट इन ए वे, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीइंग फ्रेंड्स टू गेट, मतलब विद समवन। लाइक हम कहते हैं ना ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं नहीं, for both husband and wife बोलते हैं, so that is also friendship. So I think I take it friendship in that way कि आप किसी पे, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिस पे, जो कि आज बहुत कम होता है कि आप किसी पे कन्फाइड करके आप अपनी, मतलब जैसे आज के समय में इतने लोग डिप्रेशन और उसमें जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनसे कि आप अपनी अंदर की, एंड डिप्रेशन इज इट्स नॉट जस्ट एक ये कि वो सो कॉल्ड लव जो कहते हो आपकी लड़के और लड़की के बीच में, डिप्रेशन एट डिफरेंट लेवल्स, इट इज स्ट्रेस इज एट डिफरेंट लेवल्स। सो फ्रेंड इज समवन जिससे कि आप शेयर कर सको अपनी प्रॉब्लम, दैट्स माय। और फिर लक्ष्मण जी, मैं एनी टाइम आई थिंक आई विल मेक ए मूव अगर बीच में करके। श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इंसाइट यू हैव गिवन। आपका सोच अच्छा है, हमें अच्छा लगा। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी एबल टू learn something out of all the sharings that happen in this forum. So please go ahead. अंत तक रहेंगे तो you have a chance of winning a raffle or a prize. वही एक इंसेंटिव है अंत तक रहने का। नहीं वो कोई बात नहीं, वो प्राइस वगैरह का वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ वो नो, वो तो एक कहने की बात है। थैंक यू सो मच। आई नो यू हैव गॉट अदर कमिटमेंट्स, सो आपका वेरी इनवैल्यूएबल इनपुट्स अप्रिशिएटेड। तो दिनेश जी, तो मुझे जब भी जाना होगा मैं हाथ जोड़ करके आई विल गो। ओके, वी आर मिसिंग दिनेश जी, दैट मच आई कैन से। I can once again tell him. Okay, I can just. Ajay ji, you were to. You can unmute yourself also and go ahead. Rai bayan kariye aap. Hello sir, hello everyone, and I am very glad to join with you after a very long time. In fact, I was in the and traveling from Udupi to all the way from Udupi to Bangalore to Jaipur. Okay. On 14th June, I reached Jaipur. Actually, we have a family get together. That was a reunion planning, which was organized and planned for my all family members. But because of this hot and everything, so many कहीं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आके मैंने देखी। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने आके फील किया ना मैं कि अभी सबको आना सबके लिए बहुत मुश्किल है, सब दूर दूर रहते हैं मेरे कजन वगैरह। So then we have decided not to organize. We will organize in somewhere in November or December. ठीक है, तो सर, तो इस बीच में मैंने कहीं अपने इतने अच्छे प्रोग्राम जो है अंताक्षरी और बिंगो वगैरह ये कोई मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सका बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। कोई नहीं। तो अभी आप मुद्दे पर आइए और बताइए आपका क्या विचार है। हाँ सर, एक्चुअली मैं इस बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। माई सिस्टर डॉक्टर आशिमा निगम, she had been she joined us with a long time back, but because of some family problem, like बच्चा है छोटा, अभी उनका सन जो है ना डॉटर
कि वो हुआ है, छोटी बेटी है, अच्छा अच्छा, ये सभी इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब मेरे आने से मैंने उनको थोड़ी मोटिवेट किया. I want to let her views about this thing, okay, and would like you to please over to Ashima Nigam, please Dr. please, Ashima. welcome welcome आशिमा. हेलो हेलो सर, आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं जी. जी जी जी, मैं डॉक्टर आशिमा. छोटा सा परिचय, एनजीओ चलाया है मैंने, हिंदी हाँ में कंफर्टेबल हूँ बोलने के लिए. आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल. हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट. हम लोग यहाँ हैं, और चूंकि मैंने फैमिली काउंसलिंग के कई प्रोजेक्ट्स किए हैं थ्रू हाई कोर्ट, और एड मिलती थी हमको, और उसके फैमिली काउंसलिंग के. तो इस टॉपिक पे मेरे व्यूज बहुत तो पॉजिटिव नहीं है. मैं चांस फ्रेंडशिप हो जाती है तो वेल, और अगर बॉयज गर्ल्स के बीच में बाई चांस ही तो ठीक है, अदरवाइज पर्पसली. और हम ये सोचे कि हमारी बच्ची, पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स, मुझे अपनी बिटिया के लिए लगता है कि पता नहीं, दुनिया क्लोज सोसाइटी से ही बिलोंग करती हूँ. हालांकि एमफिल हूँ, पीएचडी हूँ, और एमफिल जो किया है यूनिवर्सिटी में 6 या 7 साल हम लोग कोएड रहे हैं. लगता यही है कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सुपरविजन के साथ बच्चों को ब्रॉट अप किया जाए, और शादी जैसे बहुत ही हाईली अच्छे इंस्टीट्यूशन में सौंपने से पहले सेफ, सिक्योर, बहुत संस्कार से हम बिटिया को भेजें ताकि वो अच्छी से रहे. बस यही व्यूज रखती हूँ. फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इजी गोइंग, कंफर्टेबल नहीं है. और जहाँ तक मैं खुद थी, मैं एक अच्छी सहेलियों का एक बहुत अच्छे ग्रुप में चलती आ रही हूँ. ऐसा लगता है कि पर्पसली मैं ऐसे बच्चों को कहूंगी कि अपना कैरियर बनाएं और अच्छे से वेल सेट हो जाएं. शायद इस पर बहुत ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट ना कर सकूं. एज ए काउंसलर मैंने ये ऐसा महसूस किया, करीबन हमको 25 lakhs मिले थे पर फैमिली के लिए. डिवोर्स केसेस थे, सभी केसेस का निचोड़ यही था कि बहुत इंडिपेंडेंसी जो है बहुत आउटस्पोकन बना देती है. वही झगड़े लड़ाई ये सब कुछ हो जाते हैं. तो मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो. मेरे अपने व्यूज से मैंने चाहा कि मैं आप तक शेयर करूं. सुन रही हूँ मैं सबको, है ना, प्लीज, है ना. और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी, अपनी आप लोगों के साथ एसोसिएशन थोड़ा सा वक्त जरूर निकालूंगी. इसमें राइट या रॉन्ग ऐसी बात नहीं है यहाँ पे. दिस इज एक एक का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल किसी को कैसे हुआ है, मैं उसमें से हमको एक नसीहत, और वी आल्सो लर्न आउट ऑफ इट. कुछ बहुत ही लेते अच्छी हैं, बात आपने वही कही. गलती दोहराते नहीं है. ऐसी बात ही होनी चाहिए कि बार बार वही गलती करते रहो तो फिर आप यू आर बहुत नॉट लर्निंग अच्छी आउट बात ऑफ इट. कही आपने, ये तजुर्बे की बातें हैं. बहुत सही कहा. कहीं कुछ बैड है, कहीं अच्छे हैं, कहीं बहुत बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन टोटल बहुत सक्सेसफुल केसेस नहीं देख पाए हम अपनी लाइफ में. 70 को रन कर रही हूँ, तो ऐसा अनुभव मेरा यही रहा है कि बिटियाओं को हम जितने लाड प्यार और नाजो नजाकत से पालते हैं, वैसे ही घर और वो सब कुछ उनको मिल जाए, ये हमारी ड्यूटी है. ये हमारा काम है जो बच्चों का है ही नहीं. करें, हम बच्चे करते हैं, इत्तेफाकन हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं हस्बैंड वाइफ को भी प्यार हो जाए इसके लिए, और वो पहले से ही कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा काम उन्होंने कर लिया. वो अगर वेल प्लान नहीं है और इत्तेफाकन इस तरह का कोई मिलता है उनको पार्टनर, अच्छी बात है. आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट एंड कोऑपरेट. लेकिन ये ओपन सोसाइटी है, इसके थोड़ा सा फेवर में नहीं जा रही हूँ. मेरे अपने व्यूज हैं, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, लेकिन व्यूज है ना, और शेयर करना ऑल चाहूंगी. दीज आर एक्सपीरियंसेस जी, तजुर्बा है. आप बयान कर रहे हैं जो आपको ठीक लगे. तो बहुत these are all, one can agree to disagree and go on. बहुत अच्छा है, हम सबको इसको शेयर करना चाहिए. हो सकता है हमारी कोई बात किसी को प्रिक कर जाए, आपकी हो सकता है बात से मैं चेंज ही कर जाऊँ. मैं सुन रही हूँ आप लोगों को, हो सकता है मेरी मानसिकता में थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाए, और थोड़ा सा आप मेरे बारे में जरूर सोचें, और मैं बात करती रहूंगी आप लोगों से. थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छा सा वेलफेयर काम कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. ना सर, तो
हाँ जी। शिष्य है, तो उसको तो मतलब बहुत ही उसका जो है ना सिस्टमेटिक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और काफी जो जिस एनजीओ से वो कनेक्टेड है, तो उसमें करीबन अराउंड 30 to 50 विलेजेस हैं, जिसपे यूज टू गो टू विलेजेस पे जाके वहाँ पे ऐसी चीजों को मोटिवेशन करती है। तो आई होप कि कुछ बेटर सजेशन मिले होंगे, और बाकी आपसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। Thank you, Ajay ji. This is a forum where we can freely express जो है. Yes. It doesn't mean that everybody has to agree with everyone. हाँ। नहीं हो सकता है कभी. ऐसा है कि ये टॉपिक भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा लोगों को, बट आई थिंक इट्स अ रियलिटी एंड वी हैव टू लिव विद इट. इसके साथ हमको झूझना है, एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट। बेसिकली इफ यू सी इट एज अ प्रॉब्लम, अभी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है इसमें कि वी हैव आउटग्रोन दैट स्टेज. जब वो एक जमाना वो था, कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव थे, अभी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ओपन भी हो गया है. तो somewhere in the middle path is always a good one. So ज्ञान जी कुछ कहना चाहेंगे? Unmute yourself, ज्ञान जी. मुझे ये लगता है कि हम लोग इसको दो तरह से बांटना चाहिए. एक तो जो 50 साल पहले जो हम लोगों का जमाना था, एक जो अब जमाना. जो हम लोगों के जमाने में रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे. तब शायद एक लड़का और लड़की को बात करने में बहुत झिझक होती थी, और दोनों के घर वाले बड़े उन पे एक कड़ी नजर रखते थे. उस कड़ी नजर के चक्कर में वो अननेचुरल हो जाते थे, मुझे तो ये लगता है. इसीलिए कभी कभी वो उन दोनों में प्यार डेवलप हो जाता था, एक तरफा हो जाता था प्यार, या बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होते थे. एक उसी जमाने की मैंने एक कविता, मेरी पूरी पर्सनल तो नहीं, लेकिन मैं उस कविता को पढ़ता हूँ. मैंने उसे समय लिखी थी बहुत साल पहले. पता नहीं क्यों मैं उससे आकर्षित हुआ था. बातों में मैंने उसका पता भी पूछा था. फिर हम काफी करीब आए थे, किंतु प्रेम और स्नेह के बीच, किंतु सीमाएं जो मैंने तय की थी और प्रेम और स्नेह के बीच उसने भी अस्वीकार नहीं की. उसे अंदर ही अंदर जर्जर कर, और मैं ये मूड तब समझ सका था जब इसका अस्तित्व मिट चुका था. तब ऐसा होता था हम लोगों के जमाने में. अब काफी ओपननेस है सोसाइटी में. अच्छा, इसके पहले मैं इसको 3 आर्थिक आधार पर भी बांटना चाहूंगा. देखिए, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, 3 क्लास अगर बांटते हैं, तो अपर क्लास में लड़के लड़कियों की दोस्ती में बहुत आसानी है, बहुत आराम से उनके यहाँ दोस्ती होती है. उनके यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज्यादातर मिडिल क्लास में. लोअर क्लास में भी उतने नहीं. भले ही लोअर क्लास में बहुत से संबंध फिजिकल ज्यादा हो जाते हैं या होते हैं, लेकिन वहां पे भी दिक्कत नहीं जाती. दिक्कत मिडिल क्लास में ज्यादा, क्योंकि यहाँ विचार भी होते हैं, यहाँ पे वैल्यूज भी होती हैं, यहाँ मान्यताएं भी होती हैं, यहाँ सबकी, हर आदमी सुनता भी है, सबका ध्यान भी रखता है, समाज का भी ध्यान रखता है, समाज को भी एक दिशा देना होता है. तो सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में जो रिस्ट्रिक्शन और जो दिक्कतें हैं, वो एक लड़के और लड़के की दोस्ती में उस जमाने में भी मिडिल क्लास में ज्यादा होती है. लेकिन समय के हिसाब से अब जैसे जो हमारे बच्चे हैं, हम लोगों ने उस चीज को महसूस किया कि चीज गलत है. एक नेचुरल अगर दोस्ती एक लड़के लड़की में हो रही, इसमें कोई बुराई नहीं होती. तो हम लोग अपने बच्चों को अब ओपननेस दे रहे हैं, इसीलिए बड़े नेचुरल वे में वो उनकी दोस्ती पनप रही है. और कभी कभी वो प्यार के स्तर पर भी बदल जाती है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं. दोनों एक दूसरे को समझ के अगर प्यार भी करते हैं. लेकिन मैं ये जो लिविंग रिलेशनशिप चला है जो आजकल के जमाने में नए बच्चों में, मैं इसे बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें सामाजिक दिक्कतें हैं, वो तो एक अलग बात है. मतलब सामाजिक दिक्कतें जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड हुआ तो उसको लेजिटिमेट वैसे अब तो मानने लगे हैं वो भी. लेकिन
10 साल या 12 साल लिविंग रिलेशन रहने के बाद पता लगा एक दिन उनकी लिविंग रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब? That's an unfortunate part. हाँ, कम से कम शादी में आदमी डाइवोर्स तो ले सकता है। वो तो बस कह दिया आज खत्म तो खत्म, दोनों की लायबिलिटी समाप्त, किसी कोई लायबिलिटी नहीं, खत्म। तो ये अब लेकिन कानून ने इसको मतलब मान्यता दे दी है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं। Okay. और बाकी जो आजकल के बच्चों में, बच्चे लड़के लड़कियों में जो मतलब रिलेशनशिप डेवलप हो रही धीरे धीरे, वो ठीक है, थोड़ा सा निगरानी रखनी पड़ती है, लेकिन बाकी सब बहुत ही नेचुरल वे में चल रहा है। इससे मैं मतलब बहुत पूरी तरह सहमत हूँ। गुड पॉइंट्स ज्ञान जी। एक बात मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा इसमें कि आपने जो मिडिल क्लास की बात की, जी, मिडिल क्लास इज दैट क्लास जो कंजर्वेटिव रहे हैं हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिकली कमज़ोर रहते थे वो। अभी क्या है कि हमारे माँ बाप को क्या लगता था कि हमारे बच्चे ठीक ठाक पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठीक ठाक हो जाएंगे, तो डाइवर्स चाहिए। इसमें क्या है कि तुम पढ़ते रहो, इधर उधर मत देखो, घोड़े की जैसे आगे बढ़ते रहो। अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ए डाइग्रेशन, शायद आपके नंबर कम हो जाए। इनका उनका एक पढ़ाई एक सबसे उस हिसाब से हम लोग को बोला गया कि अब तुम लड़कियों से बात नहीं करोगे। बट डाइवर्जन उसका ना हो जाए। उनको भी रियलाइजेशन आता था या आया हुआ कि सप्रेस करने का भी मतलब नहीं है। अगर सप्रेस करके सडनली खुल जाता है तो ऐसे छलांग मारता है कि वो एक्चुअली बैकफायर हो जाता है कंप्लीटली। तो वो रिस्क रहता है उसमें सप्रेस करते करते करते। सो एवरीवेयर देयर हैज टू बी मॉडरेशन। अभी ये तो लिविंग इन रिलेशनशिप वेरी कॉमन, अभी वेस्ट में चलता है तो इधर भी चलने लग गए हैं अभी लोग, आगे बढ़ रहे हैं भी। बट या उसके रिपरकशंस कैन बी वेरी हार्श। चाइल्ड आउटसाइड द वेडलॉक, वो उसका तो बच्चे का क्या हाल होगा आगे चल के, वो कोई सोचता नहीं है। ये सब नहीं सोचते लोग। बट होपफुली उसका भी कहीं ना कहीं समाज में एक्सेप्टेंस हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वी विल नॉट वरी टू मच अबाउट इट। सो हम लोग व्यू एक्सचेंज करते हैं इधर। दैट इज व्हाट आई एम इनटू एट दिस पॉइंट इन टाइम। सोच विचार क्या है। सो या ओके, थैंक यू सो मच शुक्ला जी, अच्छा लगा आपकी बात। आपका कविता भी अच्छा लगा। देखिए ऑफ कोर्स थोड़ा हाई है, टाइम लगता है समझने में, बड़ा अच्छा था फिर। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं। राइट, यस Raman sir, if you can just unmute yourself and air your views on slightly controversial topic that everybody has got views on everything. Yes sir, that is true. Here I will say one thing. With a great hesitation, I am approaching this subject. I have certain ideas about it, certain perceptions. I hope people, I hope at least between friends, there will be no misunderstanding about it. One, there is a father who takes whiskey, brandy, this, that, all sorts of liquor. But he is unhappy when his son takes it, okay? And in defense, he says, I know my limit. But these young persons, they will drink too much. They will drive a vehicle. They will either kill themselves or kill somebody else, or at least get caught by the police. In his view, what he says is one of the sanest advice. I will stop with one glass. My son won't. I won't drive when I am drunk. My son will. This and that. You know the story. Now, so also there is a proverb in Tamil. Tholukku minjinal tholan. If your own daughter comes to your shoulder height, you are supposed to treat her
like a friend, not like a child. It is only in movies we see fathers very tightly hugging their daughters, almost kissing their foreheads and all that. In actual society, between me and my daughter, very rare if I touch her. Okay. So also, and there is this law of nature, the attraction between the opposites. That is why the Indian tradition has a standard that women have to be respected, and if you move with them, you move at a proper distance. That is because of the hormones, see. And the human mind always compares. Okay. A man is friendly with his neighbor's wife, let us say. Invariably, this man will compare that lady with his wife, and that lady will compare this friend with her husband. Naturally, comparisons, as long as you think your spouse is better, you are very happy with your spouse. If not, the problem begins. Correct. And emotions are just like electric, you see. You bring the two wires together, the spark happens even before the wires touch themselves. This is the danger. That is why in our tradition, all this hobnobbing between this boy and girl, not there. Living in relationship is an extension of the liberal mindset with which we think boys and girls, they are also human beings, human rights, they know what all these rightful talks. Slowly there is things happening, no divorce. And we didn't know about divorce, right? Some 40 years before, if somebody divorced, the people used to look at them as though they are an elephant from circus. It was a one-off happening. 10,000 marriages, there may be one divorce. Right. But the system, the scene is slightly different. There is a cumulative effect. I still hold that between a man and woman, there is a limit. There is a standard, proper minimum distance that has been made, either physically or even emotionally. If the people, both parties, have got this talent and maintain that distance and the proper level of emotions, friendship will always be there, friendship will flourish. Yeah. If something should go wrong, things can be havoc, there can be havoc. If this sense is prevailing in the minds of both the parties, you see, the normal mindset, I will tell you a joke. That joke will tell you how our minds work. A wife asks her husband, "Oh, you see the gentleman opposite? Whenever he goes to office, he kisses his wife goodbye and then leaves for office. Why don't you do like that?" And this man says, "I am prepared to do that, but our opposite neighbor may not like it." Yeah. This is a joke. This joke explains to you the way the masculine mind works. There are endless jokes about householders get misbehaving with maids, doctors or patients misbehaving with nurses. What's the basis for all this? The basis for all this is the natural, genetic, inherent quality of attraction between the sexes. So, you know the level, you practice that level and moderation, you can be friends with anybody. If you don't have the talent, God bless you. That's all. Thank you. Thanks, Raman sir. I think a lot of wisdom in whatever you said, and I think
we can relate to it. In a nutshell, I can say. Uh, anyway, a lot of things are again debatable, so we will keep it as an open item for all to talk and discuss and touch base on each of the views. Why it happened, why it cannot be done differently. So, Rajiv ji, please go ahead and air your views. Good evening, everyone. Very good evening. Very interesting topic. A lot of discussions on various aspects of that. So I was just looking at it from the friendship point of view. What is friendship? The question is, can we have a friendship in the similar way with the opposite sex as we have with the same sex? This is basically the question. So when you are friends, what happens is you can share things. You can tell whatever you want. You can go for example, you go for a picnic. So it may be boys, girls, everybody, which is possible today in the upper middle class and other people. You say, my children, I couldn't do it, but my children can. So that is the truth. That means where you can freely engage, share, and trust, or whatever you're saying as a part of friendship. I don't know why friendship immediately it has got into this physical relationship, and all our discussion has gone into some tangent. So I'm saying that, friendship per se, if you look at friendship per se also, there is a problem of dynamics that is there. Because see, what you would like to do with your friend, see, like suppose you are having some 3-4 boys, you want to go and suddenly you decide, let's go for a movie, let's go for second show. They can just go just like that. But if others are there, they may not be able to do that as freely as they could do by themselves. I'm just telling the different dynamics. Another dynamic is that you're all friends, but because these girls are there, the moment the girl becomes a friend with somebody else, then the others may feel uncomfortable, because what you already discussed, chemistry or whatever. The thing is, when you are of different sexes, automatically there is going to be some kind of this thing that somebody likes it, somebody does it, somebody becomes insecure. We have seen movies now where that movie where Shah Rukh Khan and Kajol, where they were best of friends, but they did not realize that somewhere one of them, the feelings had changed from being a friend to something else. So I think the healthiest thing would be that if you can don't get into that physical part of it, see how we can be friends and continue that friendship. If it is in that level you move, then we can have a more healthy this thing that can come with. See, if you look at our country, we have always been divided. If you go to the classroom, girls on left side, boys on the right side, we have been divided. There's no chance to even speak properly. Like you said, now our children, yes, now they are in a better off wicket. So that is there. So generation of people have already been conditioned. So when that conditioning goes away, then slowly there will be more openness, and this can happen. But in spite of all that, there is always going to be that because of the difference in sexes. Will the friendship be the same exactly as between the girls and girls? So they have a lot of girly things which they speak, which nobody else knows. So it's not that all the males will know everything what they are speaking, or the ladies will know what everything the men are speaking, and it's not necessary also. It is just that at a friendship level, there will be some differences, and that is okay. And this physical part is another thing. That's a different ball game altogether. That will happen. It happens, and it will always happen. So that is different. But just because of that, you will not have any discussion. You will not have any contact. Those things will change with time and with the exposure. How your mental makeup changes, it will change. India is not going to remain in the same way as we said. Like your parents or your grandparents treated their children. It's not going to be there. None of these kids are going to accept it also. If you say that, come on, maintain that, I will keep watch on you. You say, get lost. You have no control really. So yeah, the acceptance comes in slowly. We have seen the change. There was a time when men and women would only do namaste.
Then came the slow. Yeah, On now you can shake hands. occasions, they shake hands if it's a birthday or something. Then it has moved further. Whenever you greet, you do that. Then people have started hugging very freely. So these are all the things that have come over a period of time. It has changed, and we have accepted that change. And we don't see anything wrong in it. But the moment there is something amiss in the whole thing, the lady understands it because they have the extra sensitivity, which probably men do not realize. This is my assessment. But in my view, there are situations where a female will understand the issues or challenges that a man faces better than another friend of or someone from the same gender. ऐसा भी होता है. That is what my experiences have been, and I feel perfectly fine that you can take advice from somebody who understands that situation, though that person may be younger, maybe a female, and it benefits me. It has happened to me, so I am perfectly okay with that kind of an arrangement. Anji, go ahead. Santosh ji, you wanted to say something. हाँ लक्ष्मण जी, मैं बस मैं जाना ही चाह रही हूँ, इसलिए रमन जी ने जो हाँ, तो मैं जाने से पहले मैंने कहा 2-4 मिनट करके राजीव जी ने काफी जो कुछ कहा, काफी कुछ मैं एग्री करती हूँ. देखिए, हमें फ्रेंडशिप को ना फिजिकल लेवल पे, वो एक लाइफ का एक एस्पेक्ट है सिर्फ. वी आर नॉट, अगर लड़का और लड़की भी करते हैं, हर किसी के साथ कोई, वी हैव टू, कि हमारी थिंकिंग जो है ये है कि अगर कोई बात कर रहा है लड़का और लड़की, दैट डजंट मीन कि दे आर गोइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन. दैट थिंकिंग इज टू बी चेंज. वो मैं कहना, वो तब होगी जबकि हम अपने उसमें बिहेवियर्स में हमारे जो है वो चेंजेस आएंगे. सो केवल हम फिजिकल या ग्रॉस लेवल पे क्यों फ्रेंडशिप को देखते हैं? अगर हमें कोई जरूरत पड़ी और किसी ने हमको, किसी एक लेडी को और मेल उसने कुछ भी उसकी जरूरत, मतलब उसे हेल्प कर दिया, अगर वो किसी डिफिकल्टी में है, उसने उसे एक वाइज सलाह दे दी, दिस इज ऑल्सो फ्रेंडशिप. एब्सोल्युटली, है ना? एंड आई थिंक वी शुड टॉक फ्रेंडशिप इन दैट कॉन्टेक्स्ट, नॉट लिव इन पार्टनरशिप. वो एक वो है, वी डोंट लिव विद ईच एंड एवरीवन, मेल और फीमेल, हर किसी, मतलब ये नहीं कि विद ईच एंड एवरीवन. दोज आर, पहली बात, एक्सेप्शंस, और दोज आर विद 1 or 2 or 3, वो आई मीन 3, 4, 5, वो दैट्स एन एक्सेप्शन. तो इन वॉट एवर लिव इन रिलेशनशिप, वो एक चीज, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट. आई थिंक वी शुड, अगर हमें अपनी वाकई में 2 जेंडर्स के बीच में फ्रेंडशिप को लेना है, तो हमको उस एस्पेक्ट को छोड़ना पड़ेगा. और उसमें ये है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को वो एम्ब्रेस करती है, तो मैंने वही कहा कि विदेशों में अभी हम देखते हैं, जब हम जाते हैं तो सब, जब सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, उनके जो भी माँ बाप आए हुए होते हैं, दे ऑल्सो कम, they are supposed to attend those parties and all that, and बच्चे भी उन आंटी कैसे हैं एम्ब्रेस करें, then you, तो मैं कह रही दैट सॉर्ट ऑफ दिस थिंग इज टू ब्रिंग, जिससे कि ये टच वाली जो हमारे कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो. बस with that there is one joke I would like to share. Another joke, that is to say, you see, a girl goes for a party where boys and girls are mixing, and she asks her mother, I think George will bring me back home, so I am going, ma. Yes. And mother said, all right, you can go. And then the girl asks, what if George tries to kiss me goodnight? Okay. And then the mother says, oh, I am sure you can whisper her for help. Say that again. You can whisper for help. Oh, whisper for help. For help. Yeah, so, just whisper, don't talk loudly. No, not that. Okay. What she implies is you will welcome the diversity. That is exactly what it is. Okay. See, we all know the ideal layout for anything. Ideal husband, ideal wife, ideal daughter is this. But practical is somewhat different from ideal. We can always say platonic relationship, this, that, everything. Yeah, right, Raman sir. You're also looking at what is the
what kind of a balance can be struck is what also being discussed. That is what I said. Keep your distance. That is it. That is it. Don't Right. go more than 2 feet nearer. 24. Yeah. Good. Thank you. Thank you. Binuji, you want to add something more? Go ahead. Unmute yourself. Audible? Yeah, bilkul. Actually, I understood well that dynamics in a male-female friendship play a very important role. As Rajiv ji brought it out, not that all the time we are looking and being conscious, physical part. I am not saying that, but there are chances, as Raman sir said, that it may happen. And sometimes you get the signal ki here things may go awry or he may develop some feelings for you. Then problems start. I am not referring to that aspect of it, but the troublesome part is ki you are friends for ages, you are sharing everything, you are being over friendly. Then suddenly one fine morning you realize ki my God, he has stepped into the heart from head. Then things become complicated, whether for me, for my daughter, for anybody. That is the thing. And yes, I agree with Aman sir also. Films has played a very big role in shaping the society. The way today it is, like boyfriends and girlfriends going to Thailand together or living in. It is an extension of friendship. It is not a separate part. I beg to differ on this. It is an extension. Once you are friend, he is my friend, he is my college friend, this, that. Then you take another step, you start moving around, go for movies. Then another step, you start moving out. So it is an extension. So you have to draw a line. And the problem is that we had too many restrictions and today's children have too much freedom. So this kind of disbalance has been created in the society, which जिसके की anchor हम parents हैं. We took the brunt of our parents also, and we are taking the brunt of our children also if they are going like this. We have a very important role to play for the entire generation, us and theirs. This is what I have. Good. Good. Thank you, Vinuji. All views are welcome, and we can debate on endlessly. But it's a healthy debate, I would say. It's interesting. Who else would like to give his or her views now? I think Suresh Nanda ji, go ahead, sir. आप तो बाग में घूम रहे हैं बड़े प्यार से. Yeah, unmute yourself, sir. Now, can you hear me? Yes, we can. You see, sir, my principle, my daughter was born in 96, my son in 98. Before that, I had read a hell lot of Khalil Gibran. Khalil Gibran, prophet, he said, what about children? He said, your children are not your children. They come from you, but not from you. You can give your heart to them, but not your soul, because their soul resides somewhere else. So when I raised my children were raised they blossom in a natural way, no restriction, nothing. I have always said them, you are accountable and answerable to your life. You do whatever you like. When my children behave, I visualize myself, how I am behaving in my teenage or youth or in my middle age. That's my principle. So you're emphasizing on accountability. Yes. Your emphasis is on accountability. Pardon? Your emphasis is on accountability of whatever they are answerable and accountable to their own life, while I will put my thoughts on them. They have their own life. They have their own thought. How I was behaving in my teenage, that I judge for myself. To me, my children are a million times better than me in their teen, in their youth, everything.
So why I don't have any problem with anything. Regarding gender, you see how you behave with your wife. The children are watching. So that is the indicator of your uh, thoughts about women. Other cannot judge. Your children can judge how you behave with their mother. Then third, you see, India is a sex-starved society. The sexual urge lies in our brain, not in our food. This much I can say. Thank you. Okay. Thanks, Suresh ji. Thank you, sir. Yeah. Who else would like to air his or her views? Captain Kuldeep wants to say something. I think Subramaniam Vishwanathan has put up his hand. Yeah, let's go with him first. Yeah. Yeah, Natha. Okay. Good evening, all friends. Good yeah. evening. In fact, when I joined late as usual, but I missed some of my friends, whatever they told. I heard Gyan Shuklaji and Ramanji, and I could not agree more. I mean, they were on the dot, especially what Gyan Shuklaji told about the middle class outlook. Of course, we are all talking about our good old days. Yeah. Nowadays, the scene has changed. So whatever I am telling, that it is with the perspective of our days. Okay. There is a song from the film Bahare Fir Bhi Aayengi. Okay. Don't worry, I'm not going to sing. I am just quoting. वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे बेकार में उल्फत का इकरार समझ बैठे. क्या बात है. I think this is exactly the mindset we had as teenagers. Okay. Yeah. So can we be friends with the opposite gender? I feel no. Till during the teenage years, at least till the time we get married. And of course, yes. Okay, the mindset changes according to me. Okay. तो हमारे जमाने में एकदम segregation था, watertight compartments. These 2 rows for boys, that 2 rows for girls. And if you're a boy, and if you're, I think that even if your boy was spotted talking to a girl on the corridor, they would be taken to the principal. Okay. It was that kind of thing. Okay. So now, of course, times have changed. You can see when I look around, so many teenage boys and girls, I mean, they are mixing freely and going out and etc. But I feel that the mindset of teenagers will be same as what it was 20 years back, 30 years back, because hormones don't change. Okay. So zamana badal gaya to, but the mindset will be same. So what I feel that this is a thoughtful of the society to have such restrictions, to be conservative, in fact, to be little over-conservative, but over-conservative is also dangerous. Over-suppression may lead to other problems. Lakshmi, remember there was one character, rowdy character, Madhu, who used to hover outside the school to trap girls. So sometimes over-suppression, because those were the days when, like that song goes, if a girl smiles at you, even, slyly with her eyes, you think it is love or at least romance. Okay. Because our minds have been fueled by those Hindi films of those time. Okay. Right up to the 70s. That is a John Mukherjee song, huh? मुझे देख मोहब्बत नहीं तो और क्या है. मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है. Exactly. So even if a girl smiles friendly, or if a boy smiles at a girl friendly, immediately, I mean, you attach a romantic angle to it, okay, which could be misleading. Right? So I don't think that
we should have the luxury of allowing teenagers to be friends beyond a certain extent. I mean, okay, they can talk and all that, but going out alone, this should not be allowed, because more often than not, it lands up problems for themselves and the parents, everybody. Okay, so this is like I told that Hindi films are notorious for, fueling this. Like Bobby and Ek Duje Ke Liye. There's a Bobby, she starts with Mujhse Dosti Karoge, and you can see where the Dosti ends. Okay, defying parents without going, even grown up भी नहीं हुआ है, responsibility भी नहीं लिया है, लेकिन love priority हो जाता है उसके लिए, तो parents को defy करेंगे, and they will even jump from the cliff. Both the films, they jump over the cliff, but one film is happy ending, the other one Ek Duje Ke Liye, I resent it more. Ek Duje Ke Liye I never expected from K. Balachandar. Yeah. And the film had such an impact that several teenagers committed suicide. Okay, so this is what happens. And the filmmakers went laughing to their banks, sir. Yeah. And they are all old people. They are no longer teenagers, so they can afford to play with the teenagers' minds. So the answer is, according to me, they cannot be friends till one gets married. Okay. Once after you get married, okay, either out of majburi or maturity, your outlook changes. Okay. You look upon the opposite gender as, you start looking upon the opposite genders as friends without the burden of loading with additional load of romantic angle or even physical attraction, etc. Generally. Okay. So, and if you, as you grow older, your mind gets lighter and you are ready to accept everybody as your sisters, like Vivekananda addressed, brothers and sisters. You begin to, you are broad-minded enough to look at the opposite gender as sisters, except your wife. Okay. So, that's all I have to say. That's Vivekananda's saying, yeah. Not all. Anyway, thanks Nathan for really putting across your views in a very, very, what do you say? I can say that it was very breezy. It's very... Thank you. Yeah. Thank you so much for that. And Captain Kuldeep ji, you were to air your views, as I think Archana was mentioning. Please go ahead. नमस्कार सभी को। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज भी हम इस उम्र के पड़ाव पर आकर के अभी भी हम जेंडर्स के बीच में घूम रहे हैं। हम रमेश को जब रमेश की तरह लेते हैं, भाई नहीं बोलते, इज मिस्टर रमेश माय फ्रेंड, पर जब वो लड़की लेडी की बात आती है तो हम जेंडर को लेकर के बीच में आ जाते हैं। व्हाई इट इज सो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा और हम बदल भी रहे हैं। जो बदल रहे हैं वो बेहतर है, सच्चाइयां हमारे सामने आ रही हैं। हम अभी भी जेंडर के बीच में घुसे हुए हैं, ये होना चाहिए, ये फीलिंग आती है, वो फीलिंग आती है। दिस इज बट नेचुरल। अगर कोई सुंदर है तो फीलिंग आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप दोहरा चेहरा जीना शुरू कर देते हैं, अंदर से मन की भावनाओं को दबाते हैं। अगर कोई सुंदर है तो इसमें क्या बुरा है उसको बोलना कि वो सुंदर है? बिल्कुल। अगर कोई अच्छा है तो है। आंखों को ठंडक पहुंचती है तो क्यों नहीं? बिल्कुल। आप रोज बगीचे में जाते हैं तो रोजेस को लेकर के क्या ये मतलब कि डिफरेंशिएट करते हैं कि ये रोजेस है, ये सूरजमुखी है तो इसे ऐसे नहीं कहना, इसे ऐसे नहीं कहना? आई डोंट अंडरस्टैंड। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, टेक इट एज ए ह्यूमन बीइंग। वक्त के साथ बदल रही हैं चीजें, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बच्चों को नॉलेज आ रही है, दे आर मोर। हमारे टाइम में होता था कि कंडोम यूज करना, कंडोम मांगना एक शर्म की बात होती थी। आजकल उनकी जेब में निकलते हैं, क्या कर सकते हो आप? दे नो बेटर ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कंडोम, दैट दे नो इट। वॉलेट में रहता है उनका। बिल्कुल। हम उन्हें क्या सिखाएंगे? वक्त के साथ वक्त सब कुछ सिखाता जाता है। तो मैं तो इतना ही सुन रहा था और कह रहा था कि हक करना, व्हाई नॉट टू हग इट यार? क्या प्रॉब्लम है? जब आप एक भाई को हक कर सकते हो, एक दोस्त को मिलते हो हक कर सकते हो, तो फीमेल को हक करने में क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ। और अगर फीलिंग आती भी है तो भैया नॉर्मल मैन। हाँ, यू आर ए नॉर्मल, यू हैव टू टेक इट इन ए नॉर्मल, इट्स नॉट एन एबनॉर्मेलिटी। जैसे अभी आजकल वो समलैंगिक को लेकर के चल रहे हैं। अरे भाई, तुम समलैंगिक हो तो उसको ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? तुम हो तो हो। सी,
उसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? हर एक चीज को हम इश्यू ही बनाना चाहते हैं। एक नॉर्मल जिंदगी को, एक नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल नहीं जीना चाहते, क्योंकि वेले बंदे हैं हम हिंदुस्तानी, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं खुराफात। वेले हाँ भाई, कुछ ना कुछ खुराफाती तो वेले हैं, निकालो। अभी सठिया भी गए हैं, बोलो। सटिया, अरे सर वही तो बता रहा हूँ ना, आई एम एट द एज ऑफ 66। मुझे तो ये कुछ भी नहीं लगता, और ना ही कभी मेरे माँ बाप ने भी या हमने कभी सीखा भी है, कभी कुछ कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आई। बच्चे जवान हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपने उनको अकल दे दिया है, संस्कार दे दिया है। ये नॉट बी, अगर उनको ऐसी बात होगी तो फिर उनको झूठ बोलना पड़ेगा। बराबर। और जब वो झूठ बोलने की आदत डाल लेंगे कि यस माय डैड डन लाइक दिस थिंग, तो व्हाई टू ओपन इट अप दिस? मुझे तो नहीं लगता। एक टाइम के बाद, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जब अपनी चप्पल बेटे के पाँव में आने लग जाए तो उसे दोस्ती समझना चाहिए। जब वो इतना ग्रोन अप हो गया है कि ही कैन अंडरस्टैंड, तो उसको हमारी अपनी जो चीजें हैं वो सिखलाने में कोई बुराई नहीं है। उसको दूर रखना जरूरी नहीं है कि वो टीनेजर है। यू हैव टू टीच देम नाइसली। बाकी उनकी मर्जी है, दे टेक देयर ओन डिसीजन। प्रोफेशंस में भी दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन। कौन वर द डेज कि हमारे टाइम में माँ ने कहा कि फौज में जाना है तो साला फौज में ही जाना है, चाहे यू लाइक एवरीथिंग एल्स। वो हमारे दिन थे, अब चीज नहीं है। हमको भी अभी एक्सेप्ट कर एक्सपोजर लेना और चाहिए। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हो गया ना, हमारे वक्त पे इतना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज कहाँ थे? भी ज्यादा है। और हमें देखो, आई डोंट नो, अब माय बिजनेस इज विद 100% फीमेल्स। आई इनकाउंटर लॉट मेनी फीमेल्स एवरी डे। वंस दे ओपन अप, आज भी हम उन कुंठाओं में जी रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम दोहरी जिंदगी, दोहरा चेहरा जीते हैं, बोलते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। किस बात का डर? इस उम्र के इस मुकाम पर भी आकर के आप ये नहीं कह सकते कि yes, that female is really gorgeous and I really like her, the way she has presented her sari, the way she has presented her hair in a party। तो हम क्या कह सकते हैं यार फिर, अगर हम अपनी फीलिंग को ही नहीं निकाल सकते अच्छे ढंग से? यस, उनको एक अच्छे शब्दों के अंदर देना जरूरी है ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। हमारी सीमाएं वहीं तक है कि किसी और को बुरा ना लगे हमारे किसी भी एक्शन से। अप्रिसिएशन करने को कोई रोकता नहीं ना। अगर आप कोई ग्रेस देखते हैं, ग्रेसफुल हैं, तो यू आर फेयर इन योर ओन वे टू अप्रिशिएट द ग्रेस, जो भी अच्छा दिखता है। अगर किसी में कोई अच्छाई है तो चुंबक की तरह वो खींचेगी खींचेगी। आप क्यों रोकना चाहेंगे उसको? सही बात है। आई थिंक कहने को तो बहुत कुछ है, पर चलिए, मुझे इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे एक जगह ही इसके लिए कि सब अपनी अपनी राय बताएं यार। ये फेस इज अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू चैट अबाउट इट, जो भी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन शुड एग्री। यस, आई वाज वेरी हैप्पी। अब यही तो एक समय है जो हम अपनी जिंदगी को खूब मस्त जी रहे हैं। हाँ, अब कम से कम पढ़नी पड़ती है, ना किसी डिसीजन के लिए माँ बाप को देखना पड़ता है, ना किसी और को। दिस इज आवर लाइफ, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी वांट टू डू। करेक्ट। वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू एंजॉय। सही बात है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अध्येरी वाज देयर, दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, निकल गए। Okay, then who else? There are a few more people who have not spoken. I can see सुरिंदर जी तो चल रहे हैं पार्क में कहीं पे. I'm not sure if he'll be able to speak. ललिता मैम। हाँ, ललिता मैम तो दो जगह में लॉग इन कर रखी है, अभी कहाँ से बात करेगी पता नहीं। बट अनम्यूट तो है एक में, बट आई वुड लाइक टू स्विच ऑन दैट वीडियो ऑल्सो और बात कर लीजिए। Good evening, everyone. Good evening. Am I audible? Yes, you are. I heard a lot of people talking only about teenagers, हमारे बच्चे, हमारे young age. See, young age, that was a different age. But a married man, now you take, okay, he starts getting friendly to people whom he has not met for a very long time in his life. And he didn't get a chance to talk to them in his younger age.
they start becoming friends and get very close to each other in a whole lot of topics. What do you call that? Friendship or something beyond that? You would define it. So see, it depends upon how you're married man. Definitely the family will be there. He will have a lot of other priorities in his life. But more time is spent on chatting or talking or giving time to the people whom you have not met for ages. Suddenly that person comes in right in front of you. So that causes a problem. That should be very, very open. It should not be on a hush-hush. It should not be on a slide. You talk, we are friends. And the best way to handle this is, suppose the spouse comes to know that such a thing is happening. You make friendship with that other party. That is the best way to handle things. Because you can't speak it about to your children. You can't talk about it to somebody else. We had friends like that who were caught in such situations. So the best thing is just go. So friendship is something much, much beyond coming close to somebody. Love is a totally different thing. Love has no, it doesn't expect anything in return. It doesn't expect anything in return. That is love. Bachon ke paas. We love our grandchildren. We love our children. That's unconditional. You don't expect anything in return for it. बच्चे दो बातें सुनाएंगे, डांटेंगे, फिर भी we love them. That is love. But can the same thing happen with your spouse? हो सकता है. चार बातें सुनाएंगे, you cannot take it. That is a normal thing until and unless you are with them for more than 30-40 years. Then you ignore. It is not that you take it. You ignore it. You just leave it. ठीक है, या बोलते रहेंगे. हम अपना जिंदगी जीते रहेंगे. That is it. But in your 20s, can you take it? No. So love is totally different. Friendship is totally different. And getting attracted to somebody is totally different. These are three different things. So you cannot say, it can be anything. Now what lacks topic is, can a boy and a girl be friend? Definitely you can be friend. But see that your family knows about that friendship. If somebody asks you, wo kaun hai? You must be able to tell right away. Ye hai. You should not feel shy. You should not be scared of telling it. Abhi unhone hi bataya, I got a phone call when I was in my 30s, right? Yeah. 30s. Sanju was just in high school. Correct. Okay. So one lady calls up in the middle of in the afternoon telling, your husband is roaming about with somebody. But the thing was, I knew that somebody very well. Suppose I didn't know that somebody, then doubt aata tha. Because I knew that somebody, doubt nahi aaya. So the thing is, be open. Whatever it is, if you need relations to last, please be open. That is my view. I don't know about others. True. वो है. Sahi. I have one thing to say. Yes, Raman sir. Very concisely. Two old people, let us say, beyond 60. Not my, friendly with lady, a gentleman. It is okay if your spouse agrees to it. That's all. True. Exactly. So, Veena Diwan just about joined, I guess. Okay, any more ideas, any more thoughts for anyone to share? I must say that it has been a very intriguing session, lot of thoughts, lot of discussion.
I think there is a lot of wisdom everybody has brought in, and I think there is a lot to learn from all this. Oh, Arunaji wants to say something. Please go ahead, Arunaji. You were quite all along. I'm more enjoying listening your experiences, sir. Yeah, Arunaji. About friendship, Anji. I give much value to friendships. हम लोग को बचपन में तो उतना दोस्ती कुछ नहीं थे. After marriage only I got friends. Okay. My husband, friends, everybody. Afterwards, when I joined in service, my friends, my husband's friends, my friends, मेरे बच्चों के 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों के बच्चे friends. हर कोई माने सब कोई नहीं होते हैं ना. Friends are so many, but some people will be so close. Yeah. उनके दोस्त लोग भी मेरे घर आते रहते हैं. Ladies, माने male हो, gent हो, there's no any gender difference. We respect friendship. उनके दोस्त लोग भी आते हैं, मेरा दोस्त लोग भी, हम अपना दोस्त लोग तो आप जैसे बोलते 1 साल में प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग वैसे बना के अपने घर में we enjoy with all those olden days. Like that, we maintain friendship very nicely, sir. I like friendship because now one example, we have joined in our seniors today, just before 6 months, I think. Isn't it? Yeah, must be. Very nice friends in this group, sir. Very talented and very good friends, very nice friends. अभी देखिए अजय सर तो 15 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं. हम लोग सब उसको मिस कर रहे हैं. Correct. This is the friendship. Because we got some kind of affection towards each other. That is the friendship. I hope friendship is very essential in life. Without friends, we may not spend our time so peacefully. अगर कुछ भी problem होगा, friends will help. More than relatives, friends will help too much, sir. This is my experience in my life. I got help from my friends. No question of gender. Maybe male or female. Anyone. Only friendship means friendship. No other thought will come in between the friendships. Sir. This is my opinion. No other thought. Only friendship means friendship. Pure. It is, yes, pure friendship. That I like that type of friendship. अभी देखिए ललिता जी बात किया है, बहुत सुंदर बात किया है. हम लोग सब फ्रेंड्स बन गया. ललिता जी नहीं आने से हम भी पूछते हैं, अरे ललिता जी नहीं आ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो? अपना भाई बहन लोग नहीं, फिर भी वो अफेक्शन तो रहती है. फ्रेंडशिप में यही खास बात है. Truly. Yes, sir. The big difference between friendship and acquaintance. अभी देखिए ललिता जी नहीं आ रहा है, अजय सर नहीं आ रहा है. अभी देखिए हम लोग का कृष्ण मोहन सर भी नहीं आ रहा है. उनके लिए हम लोग फील कर रहे. ये सब तो फ्रेंडशिप ही होता है, और कोई रिलेशन हम लोग के बीच में नहीं होते हैं. करेक्ट. जैसे हम लोग डेवलप करते हैं, वैसे बच्चों लोग भी अपना फ्रेंड्स को डेवलप करते हैं. इफ वी आर प्लेन, और बच्चे भी ऐसे प्लेन होते हैं. ऐसी फ्रेंडशिप में तो फ्रेंडशिप तो रहना ही चाहिए. फ्रेंड्स तो रहना ही चाहिए जिंदगी में. विदाउट फ्रेंड्स वी कांट spend our time happily. Some of my friends lost their husbands, sir. But they stayed here only because they want to meet all the friends and to spend our time happily. बच्चे कहीं अमेरिका में हैं, आ जाओ बोलते हैं, हाँ नहीं वो they won't go. They will stay here only. Like that, friendship leads to many क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंडशिप से हम लोग का कोई भी कमी दूर होती. बिना वो ऐसी कुछ हेल्प हो, कुछ भी होने दीजिए. मेंटली भी फ्रेंडशिप में हम लोग को थोड़ा ताकत मिलती है. इसीलिए आई रिस्पेक्ट फ्रेंडशिप a lot. Thank you so much, Aruna ji. I think very nicely put. अच्छा लगा आपकी बात सुन के. I think we are running out of time, so I think we'll have to close it. We are already 7 o'clock now. Our time has started, so we'll close the discussion here. And I think maybe part 2, maybe we'll have some time. That is what I feel, because it's a very lengthy topic, and we saw a lot of action and discussion going very well.
So maybe we will look at another day also for continuing this topic. Thank you very much, everyone. Sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Lux. Thank you. Good night.